evening, everyone. Good evening, ma'am. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, so yesterday we have started with this what kinds of data can be mined, right? Which two types we have seen yesterday? कल कौन कौन से दो टाइप्स देखे हमने डेटा दैट कैन बी माइंड इसमें? Yes, What, ma'am? speak loudly. What are you saying, ma'am? कल हमने ये स्टार्ट किया था कि कौन से टाइप का डेटा हम माइन कर सकते हैं, राइट? Yes, yes, ma'am. उसमें दो टाइप के डेटा हमने देखे थे. Do you remember that? Which two types we have seen yesterday? Table type, ma'am. Relation. Relational database. And second one we have seen that was, first was relational databases, right? And second type we have seen, what was that? Try to recall. Warehouse, शायद. Right. Second was data warehouse. Okay, so these two types we have seen yesterday. So in the kind of data or type of data that can be mined, मतलब अगर हम हमारा डेटा रिलेशनल बेस में स्टोर है तो वो हम माइन कर सकते हैं. सेकेंडली, अगर हमारा डेटा वेयर हाउस में स्टोर है वो भी हम उस पर भी हम डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स अप्लाई करके कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो मूविंग फर्दर, द थर्ड टाइप of data that can be mined is transactional data, right? So in transactional data, as you can see here, first of all we'll try to understand what is transactional data or what is transactional database. Okay, so this transactional data base, as its name suggests, it is a database which record each transaction, right? ट्रांजैक्शन मतलब जैसे कस्टमर का कोई परचेस है, अगर आपने कुछ ऑनलाइन परचेस किया या फिर कुछ मॉल में जाके परचेस किया, सो यू आर डूइंग ट्रांजैक्शन, you are purchasing something and you are giving money in various formats, like you can give cash, you can use your credit card or debit card or UPI. So basically that means you are doing some transaction, right? So this transactional database database records each transaction that you are doing, like customers purchase, flight booking or user click on a web page. These all are transactions. Okay, so ये जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस होता है उसमें इस टाइप के रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, ठीक है? एंड ईच ट्रांजैक्शन हैज अ यूनिक आईडी. जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपने कहीं पे पेमेंट किया तो एक यूनिक आईडी जनरेट होता है, right? So like that, in each transaction it has a unique ID and list of items involved in the transaction. जैसे आपने कुछ परचेस किया तो वो एक हुआ ट्रांजैक्शन, उसमें एक यूनिक आईडी होगा और एक यूनिक आईडी के साथ आपने जो कुछ भी परचेस किया है, दोज लिस्ट ऑफ आइटम्स इज एसोसिएटेड, ठीक है? Then along with this, sometimes in transactional database some extra tables are stored, like item description or salesperson details or branch information. This information is also stored in the transactional database. Got it? तो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में क्या क्या स्टोर्ड होता है? एक तो यूनिक आईडी, दीज आर कंपलसरी थिंग्स. यूनिक आईडी तो होगा एक ट्रांजैक्शन का, हर एक ट्रांजैक्शन का एक यूनिक आईडी होगा.
उसके बाद उस ट्रांजैक्शन में आपने क्या क्या आइटम्स परचेज किए हैं वो लिस्ट ऑफ आइटम होगा, राइट। उसके बाद इट कैन हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक item description, then it can have salesperson details, right. It can have what I said, branch information, in which branch, from which branch you are purchasing the items, so branch details. This additional information can be there in transactional database, okay. बट अगर हम ये डेटा ट्रेडिशनल डेटाबेस में जैसे रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो वी कैन इजीली स्टोर डेटा बट वी कैन नॉट एनालाइज that data easily. Okay, analysis will be difficult if we store that data in traditional databases, right. So when we apply data mining on such data, we can identify the knowledge, we can identify the frequent items. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कि अगर आप ट्रांजैक्शनल टाइप का डेटा कुछ एनालाइज करते हो तो हमें एसोसिएशंस मिल सकते हैं, जैसे ब्रेड विद बटर, राइट। सो ये ट्रांजैक्शनल डेटा के टेबल, दिस टेबल्स आर different than your traditional databases, because relational databases store data in very simple format, and sometimes we cannot easily analyze that data which is stored in relational database, okay. But in the transactional data is different, where sales data is stored separately, purchase data is stored separately, every items data is stored differently, separately, okay. So it becomes easier to analyze, okay. And after data mining, what type of knowledge you will get from transactional data? जैसे मैंने बताया था कि association आपको मिल सकते हैं, जैसे bread plus butter. This is what one rule means, many people are purchasing butter with bread, right. So you can, or that mall owner can decide the strategy to keep them together, right. So this type of rules you may get from transactional data after data mining. Or one more example I can give is like with computers, like in electronic shop with computers, printers are getting purchased, okay. So that shop owner may give some discount if these both items are purchased together. और Amazon पे भी आपने देखा होगा कि if you search for one thing they give you some combo. देखा है आपने कभी Amazon पे अगर आप कुछ परचेस करने जाते हो तो वो एक कॉम्बो देता है कि this A plus B plus C you will get at certain price which is less. That means they are providing you discount if you buy together these three items. देखा है आपने ऐसे? यस मैम, उससे रिलेटेड भी कोई अदर जो प्रोडक्ट है वो शो करेगा कि इसे इसके हाँ, साथ बाई कि करना आप चाहिए। A सर्च करते हो तो वो देता है कि उसके साथ अगर आप B और C परचेस करते हो तो आपको लेस प्राइस में मिलेगा, राइट। तो ये B और C का कॉम्बिनेशन कहाँ से आया? बाय माइनिंग ट्रांजैक्शनल डेटा। तो वो डेटा माइनिंग के बाद जो रूल्स रूल्स मिलते हैं, जो पैटर्न्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे वो एनालिसिस होता है। दैट इज व्हाई इट इज गिविंग यू दैट पर्टिकुलर आइटम्स ओनली, कि जो फ्रीक्वेंट है, मतलब फ्रीक्वेंटली लोग ये साथ में परचेज करते होंगे, इसलिए आपने ए सर्च किया तो उसने बी और सी आपको रिकमेंड किया, राइट। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। तो ये ट्रांजैक्शनल डेटाबेस अलग, पहले वाले डेटाबेस से अलग कैसे है कि ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन सेपरेटली स्टोर होते हैं, उसके डिटेल्स सेपरेटली स्टोर होते हैं, और जब हम ये डेटा एनालाइज करते हैं तो इट विल रिवील पैटर्न, इट विल रिवील यू पैटर्न विच कैन बी यूज्ड इन बिजनेसेस, okay, to decide some sales strategies.
Okay, so till now we have seen three types of data that can be mined. First is relational, second is data warehouse, and third one is this transactional data. Okay, any doubt in these three? No, ma'am. Okay, so let's move further. Now we will see other kinds of data that can be mined. These three are primarily used in data mining. Now there can be other kind of data that can be mined. Okay, so here we'll go one by one. I'll just brief you about this कि ये other type का data क्या होता है. इसमें सबसे पहला है time related data, right? So this time related data जैसे गूगल का टाइमलाइन देखा है आपने, आपके हमारे मेल पे आता है कि विच लोकेशंस यू विजिटेड, उसका एक टाइमलाइन आता है. देखा है कभी टाइमलाइन? जी मैम। फेसबुक पे भी टाइमलाइन होता है कि विच पीपल है, मतलब अगर आप खुद का टाइमलाइन देखते हो तो आपने कब क्या अपलोड किया था, कब क्या पोस्ट किया था, वो पूरा टाइमलाइन में दिखाता है, right? So this time related data can be mined. Okay, so it stores historical data, then stock exchange data, and biological sequences. Okay, here in these fields this time related data can be used. Then second one is data streams. Data streams like continuous data in video surveillance, जैसे हमारे सीसीटीवी कैमरा में जो भी वीडियोस कैप्चर होते हैं, उस वो जो डेटा होता है वो भी हम माइन कर सकते हैं. ओके, वो माइन करके हमें क्या मिलेगा, अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी उसमें हुआ है, दैट कैन बी एनालाइज इजीली. जब हम उस पर माइनिंग करेंगे तो हमें मिलेगा कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी उसमें हुआ है या नहीं. ओके, देन स्पेशल डेटा लाइक मैप्स एंड जोग्राफिकल डेटा कैन बी माइंड. ओके, तो ये कहाँ पे यूज होगा, जब हम कुछ स्पेशल मतलब मैप का डेटा या जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन माइन करते हैं तो हमें हम कुछ स्टडीज में यूज करते हैं, जैसे सिटी का पावर्टी रेट हमें देखना है, तो उसके लिए हम ये जो मैप का डेटा है या जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो यूज कर सकते हैं. गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. then uh, then we have multimedia data like text, images, videos and audios. This data can also be mined to identify like images. अगर माइन करते हैं तो हमें, जैसे फेसबुक में आप अगर कोई इमेज अपलोड करते हो तो इमीडिएटली वो आपको ये देता है, फेस रिकॉग्निशन से कुछ टैगिंग देता है, राइट? So for such tasks like tagging the objects in images or detecting some goal sequence in sport video, such type of task can be performed after mining this multimedia data. Okay. Then there is a graph and network data. So this type of data we found in social network. जैसे social media का data है तो वो कैसा होता है, graphical format में, मतलब एक A person है that is friend of B, right? Then C is friend of, C is also friend of A. Okay, then B के कुछ friends होंगे. तो यहाँ पे after data mining, this is what graphical data. Okay, तो B is friend of A and D is friend of B. तो जब A will automatically get recommendation for D, right? So this is graphical data, and after mining such recommendations can be generated. Okay, then there is a web data. Web data that means information on internet. Okay, so web pages का जो data है वो भी हम mine कर सकते हैं. तो web pages का data mine करने के बाद हम वो जो information है that can be classified into various categories, or we can find out relationship between different web pages. We can find out the sequence in which user is browsing the web. मतलब अगर एक यूजर, बहुत सारे यूजर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ वेब पेजेस
कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में वेब पेजेस ब्राउज कर रहे हैं तो वो हम ऐसे पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं. गेटिंग इट? सो दिस टाइप ऑफ डेटा along with previous three, these all type of data if you have, you can mine it. Okay, and after mining you will get some useful information or some patterns or some trends that can be further used for various tasks. Okay, any doubt in this? What kind of data we can mine? इसमें कुछ doubt है किसी को? No, ma'am. Okay, what about others? Only Jay has replied. No, ma'am. No. No problem. Okay, fine. ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको आता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी माइंड, तो यू कैन गिव लिस्ट ऑफ दिस. या फिर अगर सेपरेटली आता है कि व्हाट इज ट्रांजैक्शनल डेटा और व्हाट इज डेटा वेयर हाउस और व्हाट इज रिलेशनल डेटा, हाउ इट इज यूज्ड फॉर माइनिंग, या फिर रिलेशनल डेटा माइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, राइट? सो यू कैन राइट दिस थिंग्स. Okay, ma'am. ओके, तो हम अभी आगे जाते हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन कि किस टाइप का डेटा हम माइन कर सकते हैं, राइट? नाउ आफ्टर माइनिंग हमें किस टाइप के पैटर्न्स, किस टाइप का नॉलेज मिल सकता है, दैट वी विल सी. दैट इज व्हाट पैटर्न्स कैन बी माइंड. मतलब माइनिंग के बाद हमें किस टाइप के पैटर्न्स मिल सकते हैं. Okay, so I have categorized them into 8 categories. There can be more, but these are important, or you can say these are primary types of patterns that we can generate after data mining. Okay, तो मतलब आपके पास अगर कुछ टाइप का डेटा है, कुछ भी डेटा है that is ready to mine, उस पे जब आप कुछ डेटा माइनिंग का एल्गोरिदम लगाओगे तो आपको किस टाइप के पैटर्न्स मिल सकते हैं. Okay, so that we will see one by one. So in that first is characterization and discrimination. Okay, so we will start with characterization. ये समझ में आया कि ये क्या है? What is this? Let's say आपके पास कुछ डेटा है, इसके ऊपर आप क्या करोगे? What, ma'am? In this data, on this data you will apply data mining, और data mining के बाद कुछ pattern generate होगा, right? This pattern, okay, I am using multiple words for this. Sometimes it is called as knowledge. Okay, it is also called as knowledge. You can call it as useful information, you can call it as trends, right? You, or you can call it as pattern. Got it? These all are same. जब हम डेटा माइनिंग करते हैं, डेटा माइनिंग का जो रिजल्ट होता है उसको हम पैटर्न बोल सकते हैं, उसको हम नॉलेज कह सकते हैं, उसको हम यूजफुल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, उसको हम कुछ ट्रेंड्स भी कह सकते हैं. ओके, तो जब हम डेटा पे डेटा माइनिंग अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो किस पैटर्न में मिल सकता है, दैट इज लिस्टेड हियर. ओके, नाउ वी विल सी देम वन बाय वन कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एंड ऑल दिस थिंग्स वी विल सी वन बाय वन. ठीक है, करें स्टार्ट. ये समझ में आया कि क्या देखना है हमें इसके बाद? जी मैम. Yes, ma'am. ठीक, तो हम कैरेक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं. ओके, I will give you one example so that it will be easy for you to understand. Okay. सबसे पहले ये समझ लो कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है. ओके, तो कैरेक्टराइजेशन gives you summary of general characteristic or summary of features of your data. कैरेक्टराइजेशन क्या देगा? आपके पास जो भी डेटा है उसका अगर आपने समरी निकाला
तो उसके क्या फीचर्स है, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन। आ रहा है समझ में? जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास कुछ शॉपिंग मॉल का डेटा है, ठीक है, जैसे लेट से डीमार्ट का डेटा है हमारे पास, और डीमार्ट का जो डेटा है उससे आपको हाई वैल्यू कस्टमर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो कोई भी शॉपिंग मॉल के हाई वैल्यू कस्टमर्स कौन होंगे? यस, कैन यू टेल? हाई वैल्यू कस्टमर्स कौन से होंगे? जो मैम ज्यादा शॉपिंग करते हो। हाँ, जो ज्यादा शॉपिंग करते हैं, राइट। तो ज्यादा शॉपिंग या मतलब, जो मैम हाँ, जो लॉन्ग टाइम से कस्टमर है उनके। राइट, वेरी गुड। ओके, आई विल राइट हियर कि जो लॉन्ग पीरियड से कस्टमर्स हैं उनके, दे आर परचेसिंग फ्रॉम लॉन्ग पीरियड, जो परचेस करते हैं लार्ज अमाउंट में, और और क्या हो सकते हैं? जो फ्रीक्वेंटली परचेस करते हैं, राइट। जो फ्रीक्वेंटली यस मैम। परचेस करते हैं, दिस Yes, कैन ma'am. बी द हाई वैल्यूड कस्टमर्स, राइट। तो आपके पास डीमार्ट का ट्रांजैक्शनल डेटा है, या डीमार्ट का जो जो कुछ भी डेटाबेस है वो आपके पास है, तो उसमें से हाई वैल्यू कस्टमर्स को फाइंड आउट करना इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन। गॉट इट? कैरेक्टराइजेशन आपको क्या देगा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ योर टारगेट क्लास ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हमारा डीमार्ट का पूरा जो डेटाबेस है, इसमें हमारा टारगेट क्लास ऑफ डेटा क्या होगा? कस्टमर, राइट। और कस्टमर का जो कुछ भी डेटा है उसमें से हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? हाई वैल्यू कस्टमर। ओके, तो ये हाई वैल्यू कस्टमर क्या हुआ? उसका कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर। दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन। आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये कैरेक्टराइजेशन के बाद आपको क्या मिलेगा? हाई वैल्यू कस्टमर्स मिलेंगे। हाई वैल्यू कस्टमर मतलब जो आप जो भी क्राइटेरिया दोगे, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। जैसे these high value customers spend, let's say, average of 10,000 per transaction. These can be high value customers, right? Or they frequently come to the mall, and like twice in a or 10 times per month. Okay, I will write here the criteria. High value customer, जब आप हाई वैल्यू कस्टमर का लिस्ट फाइंड आउट करोगे या कैरेक्टराइजेशन करोगे, तो उसके बाद आपको जो कस्टमर का लिस्ट मिलेगा वो क्या हो सकता है? जैसे जो कस्टमर 10,000 से, जिनके ट्रांजैक्शन की अमाउंट है ग्रेटर देन 10,000, और द कस्टमर्स विच आर coming more than, let's say, more than 10 times per month, or the customers which are customer of the small since, or okay, since 10 years, right? So these can be the characterization that you get after mining customers data of demand. Okay, and after characterization you can visualize it. तो ये कैरेक्टराइजेशन का विजुअलाइजेशन आप पाई चार्ट में देख सकते हो, या आप लाइन ग्राफ में देख सकते हो कि कितनी फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर कस्टमर की। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन ऑफ डेटा। एनी डाउट इन कैरेक्टराइजेशन? नो मैम।
No, ma'am. आ गया No, ma'am. समझ में कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है? Yes, ma'am. तो जब हमें ये हाई वैल्यूड कस्टमर्स का डेटा मिलेगा आफ्टर कैरेक्टराइजेशन, तो यू कैन अप्लाई वेरियस बिजनेस स्ट्रेटेजी टू देम. अगर डीमार्ट की जगह पे ये अमेजोन होता, ओके, और उसमें आपने ये हाई वैल्यूड कस्टमर्स फाइंड आउट किए, तो जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये अमेजोन क्या कर सकता है कि वो जब भी कुछ ब्राउज करेंगे तो उस पे अमेजोन का कुछ ऐड दिखाएंगे. दिस कैन बी द बिजनेस स्ट्रेटेजी. शोइंग एड टू एवरी कस्टमर इज नॉट फिजिबल. वो पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक कस्टमर को अमेजोन का ऐड दिखाया जाए, बिकॉज फॉर शोइंग एडवर्टाइजमेंट इट रिक्वायर्स सम मनी. ओके, और जो कस्टमर साल में एक बार अमेजोन पे जाके परचेस करता है उसको ऐड दिखा के भी क्या फायदा है, राइट? लेकिन जब आपने ये हाई वैल्यूड कस्टमर्स फाइंड आउट किए और इनको जब आप अमेजोन का कुछ ऐड दिखाओगे, जब ये कुछ भी ब्राउज करेंगे तो हमें साइड में एड्स दिखते हैं, राइट? तो अमेजोन ने फाइंड आउट कर लिया कि दीज आर माई हाई वैल्यूड कस्टमर्स, राइट? सो इट विल फ्रीक्वेंटली शो दीज एड्स टू दैट कस्टमर. तो वो ऐड देख के कस्टमर अगेन गो फॉर शॉपिंग, मे गो फॉर शॉपिंग, राइट? 10 बार ऐड दिखाएंगे तो एक बार तो वो परचेस करेगा. सो इन दिस वे दे कैन increase their sale. Got it? So in this manner, these characterization data can be used for to decide some business strategy to enhance sale of any particular business. This is just one example I have given. One more example I have written here, that is summarizing performance or top performing students in semester. राइट, एजुकेशनल में भी ये कैरेक्टराइजेशन यूज हो सकता है कि आपके पास सारे कॉलेज के स्टूडेंट का डेटा है, राइट? लेकिन आपको कुछ टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट का डेटा फाइंड आउट करना है, उसमें कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना है, राइट? तो आप क्या करोगे? आफ्टर कैरेक्टराइजेशन यू विल गेट दिस डेटा, टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इन द सेमेस्टर, okay, and their details you can also get. So in various field it can be used. I am just giving you few examples to understand. आया समझ में कैरेक्टराइजेशन? Yes, ma'am. Okay, so let us move to the second. Just a second. Just wait for a second. I think I have not saved that slide, so it is not getting shown.